Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's lecture on the English spoken course. Dear students, as you know, English being one of the most widely spoken languages globally serves as a common bridge across culture, enabling individuals from diverse backgrounds to connect, collaborate, and exchange ideas. As such, investing time and effort in developing your spoken English skills can significantly expand your horizons, open doors to new opportunities, and foster greater intercultural understanding. Today, I'm going to overview the outline of our English spoken course. We have a detailed outline. In first week, we will discuss about the importance of English speaking skills and course objective and expected outcomes. After this course, हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट से वो हासिल कर लेंगे. सेकेंड वीक में वी विल स्टार्ट बेसिक लैंग्वेज स्किल्स. इन बेसिक लैंग्वेज स्किल्स we have a lot of topics: phonetics and pronunciations, vowels and consonant sounds, stress and intonation patterns, common pronunciations challenges, vocabulary building. I want to tell you है कि vocabulary building हमारे कोर्स में अलग से भी एक टॉपिक इंक्लूड है, जिसमें हम डेली बेस पर 10 वर्ड्स vocabulary के कम से कम याद करने के लिए देते हैं और बाकायदा डेली बेस पर व्हाट्सएप पर उसका टेस्ट लिया जाता है. वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड फैमिलीज, अल्फाज को तरतीब कैसे देना है, idiomatic expressions and collocations, contextual usage of words. कंटेक्स्ट के हिसाब से हमने एक वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करना है. हम वोकैबुलरी तो याद कर लेते हैं, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं होता कि हमने किस लफ्ज को कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करना है. ग्रामर एसेंशियल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस एंड वर्ब फॉर्म्स, कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स टू अवॉइड. सेकंड वन, वी विल मूव कन्वर्सेशनल स्किल इन विच वी आर पेइंग. हम इसी का तो पे कर रहे हैं कि हमने बोलना सीखना है, तो हम सिखाएंगे बोलना. एवरीडे कन्वर्सेशंस, जिसमें greeting and introductions, asking for and giving personal informations, describing people, places, and objects, socializing and small talk, discussing hobbies and interests, talking about current events and popular topics, sharing opinions and perspectives, practical scenarios, ordering food in restaurants, shopping and bargaining, asking for directions and giving instructions. After that, प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल. ये चीजें सीखने के बाद अब हमने उसको प्रेजेंट कैसे करना है और लोगों के सामने हमने कैसे बोलना है. इन विच वी विल डिस्कस प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए जरूरी होते हैं. उसने प्रेजेंटेशन देनी है. स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. प्रेजेंटेशन की जो कि मेन चीजें होती हैं वो ऐसे हो, हमारे पास लेटर हो या स्टोरी हो. हमने इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तो हम इसमें इस चीज़ को कवर करेंगे. क्रिएटिंग इंगेजिंग ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल. ये दोनों चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं तो आप एक बेहतरीन स्पीकर समझे जाते हैं. ऑर्गेनाइजिंग मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाना किसी भी हवाले से हो, वो आपकी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग हो सकती है. अगर आप जॉबियंस हैं तो आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकती है कंपनी हेड में, या फिर वो आप स्कूल टीचर्स हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं. तो तमाम चीज़ों के लिए आपके लिए इंतहाई मुफीद होगी. हमारी ये जो आउटलाइन है, ये सिर्फ एक तबका को सामने रखकर नहीं बनाई गई, बल्कि तमाम चीज़ों को सामने रखकर हमने बनाया है कि अगर वो एक टीचर है, स्टूडेंट है, जॉबियन है, फ्रीलांसर है, तो वो तमाम चीज़ें सामने हों कि वो किसी भी स्टेज पर जाए तो उसको किसी भी तौर पर हेजिटेशंस का सामना ना करना पड़े. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कंटेंट एंड जेस्चर, इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल्स, ओवरकमिंग स्टेज फ्राइट एंड इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस. जिसका सबसे ज़्यादा हमें सामना करना पड़ता है कि हम प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, अपने अंदर के डर को कैसे ख़त्म करना है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करवाते हैं. और डेली बेस पर हमने इस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए अलग से
एक टॉपिक फिक्स किया हुआ है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, practice and rehearsal strategies, handling question and feedback. After that, we will discuss role play and simulations. Simulations में interactive activities, role playing real life situations, simulating job interviews and business meetings. खासतौर पर ये हमारे जो फ्रीलांसर्स दोस्त हैं उनके लिए बड़ी अहम चीज हो सकती है कि उन्होंने बिजनेस मीटिंग्स में अपने आप को किस तरह से अपेयर करना है। प्रैक्टिसिंग निगोशिएशंस एंड persuasion skills, किसी को कायल किस तरह से करना है आपने अपने स्किल्स दिखाकर। पेयर एंड ग्रुप वर्क, collaborative problem solving activities, team discussions and debates, peer feedback and evaluations. After that we will discuss cultural awareness. As you know, language जो है वो वेरी करती है इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट, कल्चर टू कल्चर। और फॉर एग्जांपल ब्रिटिश का एक्सेंट हो रहा है, एक्सेंट सॉरी, ब्रिटिश का एक्सेंट हो रहा है, अमेरिकन का एक्सेंट हो रहा है, चाइनीज का हो रहा है, इंडियंस का हो रहा है, पाकिस्तानीज का हो रहा है। तो हमने ये देखना है कि जिस तरह से कल्चर डिफरेंस हो रहा है उसी तरह से हमारी लैंग्वेज किस तरह से वेरी कर रही है, जिसमें कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल नॉर्म्स, एटिकेट्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, sensitivity towards cultural diversity, cross-cultural communication skills, adopting communication styles for different cultures, recognizing and avoiding cultural misunderstandings, appreciating and respecting cultural perspective. After that, the most important topic, real world application. ये तो सीख लिया हमने, लेकिन अब हमने उसको एप्लीकेशन में, उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो भी हम सिखाएंगे। जॉब इंटरव्यूज एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, रिज्यूमे राइटिंग एंड कवर लेटर टिप्स। एमएससी, एमफिल और पीएचडी करने के बाद भी हम किसी मैट्रिक पास कंपोजर को देख रहे होते हैं कि वो हमारी सीवी कंपोज करते हैं। तो इन दिस कोर्स हम आपको सिखाएंगे कि हमने एक बेहतरीन सीवी आपने कैसे लिखनी है इंग्लिश में, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, बिजनेस कॉस्पेंडेंस एंड ईमेल एटिकेट्स, public speaking opportunities, presentation and seminars. So here is the detailed outline in which we will delve into various aspects of spoken English, focusing on key areas such as pronunciation, vocabulary expansions, grammar usage, fluency development, and effective communication strategies. तो ये तमाम चीज़ें हम इनको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा ये जो कोर्स है ये सिर्फ इस हद तक मुश्तमिल नहीं, बल्कि इंशाल्लाह आई एश्योर यू दैट वी विल incorporate various resources including audiovisual aids, materials, authentic text, and multimedia tools to create an immersive and engaging learning environment. So, be ready for next lecture. इस आउटलाइन को एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें। व्हाट्सएप पर हमारी मुकम्मल गाइडेंस होगी लाइफ टाइम के लिए, और जहाँ कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप एक मैसेज के ज़रिए से हमसे पूछ सकेंगे। हमारे यूट्यूब लेक्चर्स को ज्वाइन करें और इसके साथ साथ व्हाट्सएप लेक्चर पर या व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए हमें मैसेज करें ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड करें और वहाँ पर हम बाकायदा तौर पर आपको एक कोर्स की शक्ल में लेकर आए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।